Hello students, I welcome you all on the online study platform of Sri Academy. Students, from today we will start our prose section and the very first chapter of prose is the fun they had. The meaning of the chapter, the fun they had, means the fun which was in past. Come to the next. The writer of the story is Isaac Asimov. His period is January 2, 1920 to April 6, 1992. As Isaac Asimov was an American writer and professor of biochemistry at Boston University. He was known for his books of science fiction and popular science. Asimov was a prolific writer who wrote or edited more than 500 books and an estimated 90,000 letters and postcards. Students, be aware about the science fiction. Science fiction is a story or novel which revolves around some scientific experiment or experience of writer. And this story is also a science fiction because it is a virtual classroom. The whole setup of the story is about virtual classroom where people engage with robotic teacher, with computer screens. There was no teacher which is human being. So the setup of whole story is a scientific. So it is called science fiction. And Isaac Asimov is very much famous for this kind of fiction or story writing. Now come to the characters. The very first character is Margie, a little young girl of 11 years old. Next is Tommy, a boy of 13 years. Next is Mrs. Jonas, Margie's mother. Now come to the gist of story. Gist of story means summary of the story. And the story starts with the futuristic period of 17th May 2175, more than 1000 years after today. There was no real classrooms and school. People are studying through their own virtual classrooms where robotic teacher and computer screens are used for teaching students. Margie and Tommy are discussing about an antique thing, a real book, which is of Tommy's grandfather's grandfather. मीन्स ये कहानी स्टार्ट होती है 17 मई 2175 को, आज से लगभग 1000 साल से भी अधिक बाद। और क्या होता है उस टाइम, जबकि वहाँ कोई रियल क्लासरूम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, स्कूल नहीं होते जैसे हम आजकल पढ़ते हैं, बल्कि वहाँ क्या होते हैं वर्चुअल क्लासरूम्स जो हर एक स्टूडेंट अपने लिए अपने घर में बनाए रहते हैं। उसमें रोबोटिक टीचर होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन्स होती है एंड वर्चुअल क्लासरूम्स, और उन्हीं के द्वारा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हियर इन दिस स्टोरी मार्जी एंड टॉमी, द टू कैरेक्टर्स, दे आर एंड टॉमी फाउंड अ बुक। टॉमी क्या पाता है, एक किताब, एक रियल किताब पाता है जो कि उसके ग्रैंडफादर की रहती है, और उसको वो उनके लिए एक एंटिक चीज़ है। एंटिक मीन्स एक आश्चर्यजनक चीज़ जिसको कभी न पहले देखा गया हो, बिकॉज दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड अबाउट रीडिंग through soft copies, online reading with telebooks, and they found a real book. That's why they are very much surprised that what kind of the book, it is real book. So both are very much busy in reading and watching the book, which is Tommy's grandfather's grandfather. Here in the next, the book is about school, and the book which Tommy found is about school. And Margie had a very bad experience about school. Her mechanical teacher always gives her assignment for a fixed slot. There is no emotional bonding between students and teacher like today, but there everything is mechanical and full of boredom. While doing her classroom from computer screen, Margie think about the school of great-grandfather where all kids go for study and teachers are human beings and they teaches every students differently. At the same time, Margie feels mesmerized with the thought of the fun their grandfathers had. And जो वो एंटिक चीज़ जो उन्हें मिली, जो किताब मिली,
ये स्टोरी आज के लगभग 1000 साल से भी अधिक के सिचुएशन जो होगी उसके बारे में राइटर की एजम्पशन है कि जैसा कि साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, हम जितना ज़्यादा ही रिलायबल हो रहे हैं सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कंप्यूटर्स एंड अदर साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, वैसे लगता है कि इस टाइप की सोसाइटी हो सकती है जहाँ पीपल टू पीपल कनेक्शन इज़ वेरी लो. There is lack of emotional bondings between teacher and students because there was no teacher like us, because there was no physical teacher. There was robotic teacher that instruct or that suggest to read or write or whatever else teacher does. So, and what kind of the society that is, the writer tries to explain it that that society can be very much boredom, like Rini feels, like माजी फील्स. माजी को क्यों स्कूल शब्द से नफरत है? क्योंकि उसका जो स्कूल है, उसका जो वर्चुअल क्लासरूम है, वो जो उसका कंप्यूटर टीचर है या रोबोटिक टीचर जो है, वो परमानेंट उसे एक फिक्स टाइम के लिए कुछ असाइनमेंट देता है, कुछ वर्क्स देता है और तुरंत उसके रिजल्ट मांगता है, और जिसमें कि माजी अच्छा परफॉर्म नहीं करती और उसको कोई अलग तरीके से पढ़ाने वाला, दूसरे तरीके से समझाने वाला नहीं है. सेम क्लास, सेम एटीट्यूड, सेम थिंग, because that is mechanical, that is not a human being. That's why everything is same every day, and because of this Maji feels boredom with her class and with her school. और जब एक बार माजी क्लास करती रहती है अपना, और उसे जो उस किताब में, जो एंटिक बुक में जो उसे मिला स्कूल के बारे में, जो उसने पढ़ा कि कैसे उसके ग्रेट ग्रैंडफादर पढ़ा करते थे, स्कूल जाया करते थे, टीचर्स होते थे, क्लासमेट्स होते थे, तो उसके बारे में सोच करके वो बहुत ही मेस्मराइज्ड फील करती है. एंड सी थिंक्स, ओ व्हाट वाज द डेज आवर ग्रैंडफादर हैड, व्हाट काइंड ऑफ फन द on that period our grandfathers have experienced. And in the period of COVID, you people also experiencing the same, the fun which you had enjoyed in your schools, that is absent today. You are studying through online classes, but that the enjoyment which you feel here in the school, that is absent today. That's kind of feeling Maji had. Come to the next. Come to the storyline and see, this very picture. This very picture clears the whole thing, makes you clear the whole thing. See this, it is visual classroom. It is moving e-text with computer screens. Here robotic teacher. Here is learning through computers. And all are here a boy sitting and learning through computer, and he is sitting alone, and these are the schools of future. And next, these are the assignment to do yourself, and I come to the lines of the story. So here Maji even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book. It was very old. Maji's grandfather once said that when he was little boy, his grandfather told her, Maji's grandfather told her told him that there was a time when all stories were printed on paper." ये कहानी स्टार्ट होती है 17 मई 2175, जब माजी अपनी डायरी में नोट करती रहती है कि टॉमी एक रियल बुक पाया है जो कि माजी के ग्रैंडफादर की है, और उसके ग्रैंडफादर जो कि टॉमी के ग्रेट ग्रैंडफादर की है, और उसके एक दिन माजी के ग्रैंडफादर ने बताया था उसे कि उनके टाइम में सारी स्टोरीज जो होती थी वो पेन पेपर पे लिखी होती थी, और उसी के थ्रू माजी पढ़ाई किया. द नेक्स्ट, दे टर्न द पेजेस
which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words and stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before it had the same words on it that it had when they read in the first time. Crinkly means with many folds or line means मुड़ा हुआ या बहुत पुराना पेपर. तो क्या देखा उन्होंने, एक एंटिक चीज़ मिली जो उनके लिए एंटिक थी. वो क्या थी? एक रियल बुक थी जो कि पेपर की बनी हुई थी, लाइक द बुक वी यूज टुडे. बट दैट बॉयज एंड मीन्स दैट किड्स आर नॉट अवेयर अबाउट इट बिकॉज दे आर हैबिचुअल टू रीडिंग टेली बुक्स, ऑनलाइन बुक्स, एंड दैट्स वाई. एंड दिस बुक हैज़, उनको क्या इसमें खासियत मिलती है कि कभी भी इसका पेज पलटो तो सेम रहता है, सेम लेटर्स रहते हैं, वो ऊपर नीचे नहीं जाते रहते लेटर्स, सब एक ही जगह रहते हैं, जहाँ जैसे रहते हैं वैसे ही. फिर पलटो पेज, अगर पलटो तो फिर वहीं मिलते हैं, जैसा कि टेली बुक्स में नहीं होता. ऊपर चले जाते हैं, वो स्क्रीन हमेशा रनिंग स्क्रीन रहती है, वो ऊपर जाते रहते हैं, लेटर्स आते रहते हैं. तो इस बुक में फिक्स था. द नेक्स्ट, गी सेड टॉमी. Gee, said Tommy. Gee, said Tommy. What a waste. When you are through this book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away. Tommy क्या कहता है? Gee, what kind of waste it is. And here Tommy is talking about his experience of telebooks, that in his computer screen क्या होता है, उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत सारी बुक्स एक साथ अवेलेबल हो जाती हैं उसे. अगर वो इस अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है इस बुक के प्रति. सेम विद माइन, सेड मार्जी. शी वॉज 11 and had not seen as many telebooks as Tommy said he was 13. Tommy is a senior boy than Margie, and he has very much experience of reading much telebooks than Margie. वो बहुत सारी टेलीबुक्स को पढ़ चुका है जितना कि माजी ने भी नहीं पढ़ा है. और टेलीबुक्स क्या होती हैं? व्हाट इज टेलीबुक्स? सो इट इज़ online books. You can say it, online books are called telebooks. The books which is read on the computer screens are called telebooks. And next, she said, where did you find it? Margie ने पूछा, Tommy, from where did you find it? So Tommy ने क्या बोला? In my house, he pointed without looking because he was busy reading reading what he says in the attic. जब मार्जी ने पूछा कहाँ से ये बुक मिली तुम्हें, तो क्या कहा? मार्जी asked, from where you found it? Then Tommy replied that I found it on attic. Attic is a space just below the roof and used as a storeroom. So from there Tommy found the book. And what is about? Asked Margie. School. Margie was scornful. Scornful means very disappointment and showing that the thing is worthless. So she shows her attention that what you are talking about? It's about school. Because Margie has, why she hates about school? Because that school is very boredom. Where Margie feels boredom every time. She has not feel any interest. She doesn't have any interest in that kind of school. Come to the lines. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Margie बहुत ही नफ़रत है उसे स्कूल से, क्योंकि इस टाइम उसकी मैकेनिकल टीचर उसे असाइनमेंट पे असाइनमेंट देता जा रहा है और वो उस पर अच्छा बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रही है. वाई? बिकॉज द वे ऑफ टीचिंग ऑफ मैकेनिकल टीचर इज सेम एट एवरी टाइम
But Maji is a different kind of child, needs different kind of attentions that is possible in the physical classrooms like us. Like teachers give proper attention to each students. That is not happened in the virtual classrooms. That's why Maji feels disappointment with the word school. And then her mother sent Maji to the county inspector. He was a round little man, a red face, and a whole box of tools and dials and wires. He smiled at Maji and gave her an apple, then took the teacher apart. Maji had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad, the part Maji hated. वो जहाँ गई माजी जिस काउंटी इंस्पेक्टर के पास, वो एक रेड फेस वाला आदमी था विद अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स, एंड ही स्माइल्ड एट माजी एंड उसको एप्पल दिया और फिर उसे एक दूसरे कमरे में ले गया जहाँ बड़ी बड़ी अगली स्क्रीन्स लगी हुई थी, लेकिन माजी को उस टाइम कोई ऐसा बहुत नफ़रत नहीं हुआ जैसे कि उसे अपने वर्चुअल क्लासरूम्स में हुआ करता है. And most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out 6 years out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher could calculate the marks in no time. Slot means a given time, a space, or position, means a set time. It's called slot. So Maji is trained to submit assignment like you people are also training in these days, getting training for Zoom classes, for Zoom meeting, for online classes. ट्रेनिंग मिल रही है ना, सीख रहे हो ना कैसे कैसे करते हैं ऑनलाइन क्लासेस, जूम मीटिंग्स कैसे करते हैं, सब सीख जा रहे हैं. उसी तरह से मार्जी को भी बता दिया गया था जब वो 6 years की थी कैसे क्लासेस होते हैं, कैसे उसमें असाइनमेंट डाला जाता है, और मैकेनिकल टीचर जो है उसका मार्क्स सेकेंडों में कैलकुलेट करता है. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड माजीज हेड. और इंस्पेक्टर इसके बाद क्या किया, उसने माजी ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, उसे क्या प्रॉब्लम है. तो इंस्पेक्टर सुनने के बाद उसके सर को सहलाया. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोनस. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. उसने कहा, geared means what is the meaning of geared? Adjusted to a particular standard or level. तो what said the county inspector to Maji's mother, who is Mrs. Jonas? Mrs. Jonas is Maji's mother. So the county inspector said Mrs. Jonas that इसमें कोई इसकी माजी की कोई फॉल्ट नहीं है मिसेस जोनस. इट्स द फॉल्ट ऑफ आवर सिस्टम that geography, which is not usual subject, which is tough than other subjects, has geared in Marji's syllabus, and Marji is forced to read that. And then I think the geography sector was geared a little too quick. मार्जी को ये बहुत जल्दी पढ़ने को दे दिया गया जोग्राफी सेक्टर. दोज थिंग्स समटाइम्स हैपन समटाइम, ऐसी चीज़ें होती हैं. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल. उसने क्या किया, देखो उसके जो सिलेबस है उसको स्लो कर दिया. मार्जी के सिलेबस को क्या किया, स्लो कर दिया. और मार्जी फिर क्या, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसके सिलेबस को स्लो कर दिया, उसके सिलेबस को कम कर दिया, जो 10-year लेवल का कर दिया. माजी इज़ अ 11-year-old गर्ल, बट एंड देन द इंस्पेक्टर सेड दैट द माजीज ओवरऑल परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड हर हेड अगेन. एंड माजी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन होपिंग दैट they would take the teacher away altogether. They had once takes Tommy's teacher away
for nearly a month because the history sector had blanked out completely. माजी क्या सोच रही थी? माजी was disappointed by the act of काउंटी इंस्पेक्टर. क्योंकि क्यों डिसअपॉइंटेड हुई? क्योंकि उसने तो बस उसका एक लेवल लो कर दिया उसके सिलेबस का. लेकिन माजी क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? जैसे कि एक बार टॉमी के साथ हुआ था, उसके हिस्ट्री टीचर मीन्स हिस्ट्री सेक्शन को हटा दिया गया था उसके कंप्यूटर स्क्रीन से. तो वही सोच रही थी कि इसके भी ज्योग्राफी को क्यों ना हटा दिया जाए. लेकिन क्या हुआ? उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए माजी डिसअपॉइंटेड है. क्योंकि उसके टीचर्स सेम हैं अभी भी, वही बोर्डम, वही क्लासरूम. बिकॉज ऑफ दिस माजी फील्स डिसअपॉइंटेड. एंड देन so she said to Tommy, why would anyone write about school? Because of all these experience, Maji said, oh, who is the person who write about the school? Because she had a bad experience. That's why she said to Tommy. Tommy looked at her with very superior eyes. Tommy is a senior. That's why he shows his superiority over Maji. And looked at her, and then he replies, because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. वो कहता है कि अरे पागल, ये हमारे काइंड का स्कूल नहीं है जहाँ वर्चुअल क्लासरूम है, रोबोटिक टीचर. ये 1000 years पहले या 100 years पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे जहाँ सारे बच्चे बैठ करके पढ़ते थे, टीचर्स के साथ पढ़ते थे. लॉफ्टली मीन्स इन सुपीरियर वे. माजी एंड टॉमी इज अ senior to Maji, that's why he is showing his superiority over her. Okay, in the next. Sure, they had a teacher. What Maji asked? Sure, they had a teacher. श्योर हो तुम कि उनके पास एक टीचर थे? बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. मीन्स कि जैसे रेगुलर टीचर जैसे मार्जी और टॉमी के हैं इस टाइम, मतलब ये रोबोटिक टीचर, वैसे टीचर नहीं. मार्जी आस्क कर रही है कि रेगुलर टीचर, दैट वॉज मैन. हाउ इट इज़ पॉसिबल? अ मैन? हाउ कुड बी अ मैन बी अ टीचर? मैन कैसे एक टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. Man, they are very surprised because they have not the human being. They haven't seen human being as a teacher. They have always experienced robot as a teacher. That's why they are very surprised that a man can be a teacher. He is able to learn, to give all the homework, to give all the assignment, classworks. All this can be done by man. They are suspecting about it because they don't have the experience of human teacher. A man isn't smart enough. Sure he is. क्या मैन स्मार्ट नहीं होता? फिर कहते हैं क्या मैन स्मार्ट नहीं होता इनफ? फिर होता है, क्योंकि मेरे फादर, माजी के फादर, माजी सेड कि माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. मैन भी हो सकते हैं स्मार्ट, बिकॉज माजी इज सेइंग कि हर फादर इज as smart as her teacher is. He knows almost as much. I betcha. Betcha is here. Informally it is used. Betcha means bet you. अगर जल्दी से इसको कहना है तो क्या कहेंगे? Betcha. So Maji was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. Maji कहती है कि नो, मैं नहीं चाहती कि कोई एक स्ट्रेंज मैन आकर के मेरे घर में रहे और वो मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी उस पर जोर से हंसता है. क्या कहता है? यू डोंट नो मच माजी. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. नो माजी, टीचर आकर के घर में नहीं रहते. वो उनके लिए एक प्रॉपर बिल्डिंग होती है जहाँ सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं और वो वहाँ पढ़ाया करते हैं. Tommy is explaining about the real school to Maji. Okay, and then and all the kids learned the same thing. Sure,
if they were the same age? But sure, if they were the same age. But my mother says the teacher has to be adjusted to fit the mind of each body and each boy and girl. If teachers and that each kid has to be taught differently means वो और सारे टीचर्स जो हैं उस एज ग्रुप के सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स को पढ़ाया करते हैं एक साथ डिफरेंटली पढ़ाते हैं एक साथ उनको जो जिस तरह से समझता है उसको उस तरह से समझा करके एक ही चीज़ पढ़ाते हैं लेटर बट जस्ट द सेम they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. She wanted to read about those funny schools. वो भी अब उसका भी इंटरेस्ट होने लगा और वो भी उस फनी स्कूल के बारे में जानना चाहने लगी. They were not even half finished when Maji's mother called. Maji school. वो तब तक पढ़ती रही जब तक कि उसकी मम्मा ने उसे बोला नहीं कि माजी come for the school because it's time for the Maji's school. माजी looked up. Not yet, mama. माजी क्या कहती है? No, mama, अभी नहीं. Now, said Mrs. Jonas, and it's probably time for Tommy too. और मिसेस जोनस क्या कहती हैं? और ये समय टॉमी के भी स्कूल का हो चुका है. They have their school in their house, and for that they have allotted a fixed time. Every day they have to go in that room, sitting on the chair and reading through the computer screen with the direction of her robotic teacher. So they feels very bored. They feels very disappointment with that kind of school. That's why they are every time showing their reluctance towards the study. Maybe, Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? क्या हम इस बुक को अपने स्कूल के बाद और पढ़ सकते हैं? मार्जी टॉमी से बोलती है. Maybe, he said nonchalantly. Nonchalantly means not showing much interest or enthusiasm carelessly. वो ऐसे ही कहता है ठीक है पढ़ लेंगे. वो बहुत इंटरेस्ट enthusiasm नहीं दिखाता है. He walked away fusillingly, the dusty old book tucked beneath his arm. वो अपने आर्म के नीचे हाथ के नीचे ऐसे दबा करके बुक को लेकर के धीरे से निकलता है. Margie went into the school room. It was right next to her bedroom. Margie अपने स्कूल रूम में जाती है जो कि उसके बेडरूम के नेक्स्ट में है. And the mechanical teacher was on and waiting for her. और अपने मैकेनिकल टीचर उसका ऑन है उसके इंतज़ार में बैठा है. It was always on the same time every day except Sunday and Saturday. सेम उसी टाइम उसी तरह से बैठना होता है. वो कंप्यूटर स्क्रीन ऑन हो जाती है उसको पढ़ाना स्टार्ट कर देती है. Only except Saturday and Sunday. Every day they used to do that kind of teacher. See, here is the picture. In the picture, you also see Margie is sitting, and this is the whole setup of her virtual classroom. She is alone. Here is the robotic teacher, and all the computer screen all are available to her, and she is just reading with that. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. क्योंकि उसकी माजी की मदर क्या कहती है कि little boys or girls learn first on the regular. If they study on regular basis, they will learn first. That's why Margie and Tommy follows a proper time for study. The screen was lit up. Screen on हो जाती है and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. और उसकी कंप्यूटर स्क्रीन ऑन हो जाती है और वो कहती है उससे कि आज हम तुम्हें प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पढ़ाएंगे और तुम अपने कल के होमवर्क को इंसर्ट करो. माजी डू सो विद अ साई. माजी उसे धीरे मीन्स बिना इंटरेस्ट की करती है. She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people.
The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions 1 by 2 and so on. Margie was thinking about how the kids must have loved in the old days. She was thinking about the fun they had. मीन्स हियर मार्जी अपना पढ़ाई तो कर रही है, अपने कंप्यूटर स्क्रीन के इंस्ट्रक्शन को तो फॉलो कर रही है, लेकिन उसका माइंड कहाँ है? उन्हीं बुक्स के स्कूल्स में, उस जो बुक को रीड की थी अभी उसी स्कूल के, जिस स्कूल के बारे में उसमें डिस्क्राइब था, वहीं है कि हाउ द फन ऑन दैट टाइम द बॉयज़ एंड गर्ल्स वर सिटिंग, दे वेंट टू स्कूल, दे enjoyed their friendship, they enjoy walking in school, they enjoy learning in school, they enjoy teachers, everything she is. And then she experienced that the days of their great grandfather were very funful day. So this was the title, the fun they had, that is the title. And this is the whole story. I have to explain it line by line. And here in this chapter, the writer tries to point out how the human and social connection are affected with the development of technology, where everything is mechanical, even teacher is also. People are surrounded by machines only, and their lives become monotonous. This chapter is about much relevant for today's world in the period of COVID pandemic, where people have to maintain physical distancing very much dependence on technology. But still, we should not have to forget the social responsibility and engagement. We can maintain the social distance, but not the social responsibility. We can't distance ourselves with our social responsibility. And this is all your chapter, and I hope you all have understand the chapter, because I go thoroughly line by line, explain the whole chapter and solve the exercise also. If you have any problem, you can download the solution of exercise from NCERT's portal. And if you पुट अप, अगर उस पर डालोगे आप कि NCERT सॉल्यूशन, तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, इसके एक्सप्लेनेशन। और जो अगर प्रॉब्लम होती है ग्रामर सेक्शन को और भी, तो मैं उसको जूम क्लासेस में आपके उसको क्लियर कर दूँगी। और इनको लिख करके सारे को PDF बना करके इसको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करोगे क्लास के। दिस इज़ द होमवर्क एंड थैंक्स फॉर टुडे, दिस इज़ ऑल।